Without wasting a time, let's move on to our topic, which we have chosen for today. This is in context of our series, wherein we are discussing some important topics concerning Indian polity or governance, for that matter, right? And how to write effective essays on those burning topics which concern our Indian polity, okay, as well as governance. Last time we discussed about criminalization of politics, and we discussed various pros and cons regarding the regarding the efforts that we have made till date so as to curtail the criminalization of politics. Today we are moving on to a very important topic that is called as Uniform Civil Code. Everyone must be aware of the fact that this issue has been debated in this country since long. In fact, right since the landmark judgment of the Supreme Court in Shah Bano case of 1985, right, this issue hogged the limelight when for the first time Supreme Court suggested, right, and not directed but suggested, right, to the then government that it is high time that a uniform civil code must be enacted, right, so that the rights of the women, particularly belonging to certain communities, especially Muslim and Christian, right, their right must be protected, right, as they are protected of other communities like Hindus, wherein the customary laws or personal laws have been what you call as have been codified to a larger extent. So before we delve into this issue, इससे पहले कि हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करें, let me be bilingual first of all. Let me introduce first of all about the concept of Uniform Civil Code. What is Uniform Civil Code? So that we can form our opinion to write an effective essay on this topic. You must be aware of the fact that, and it's a reality, it's a reality and rather beauty of India, that India is noted for its huge diversity, right? It is said that India is not only a nation of continental size, but it is also noted for its huge diversity. इस देश की इतनी diversity है, विविधता जिसको हम कहते हैं, ठीक है? In this diversity, right, there are not only the people professing different religions, but there are so many languages, so many cultures and other practices, which constitute the uniqueness of this country. To a largest extent, to some extent, this diversity is definitely good for the nation, because ultimately it allows people to practice their own culture, follow their own ethos, follow their own practices, right, and this reflects the kind of freedom they enjoy in this country, right. But beyond a certain point, this certainly becomes problematic in the sense that when your practices, अगर हम religious practice की बात करें, when it comes in conflict with the rights which are guaranteed by our constitution to everyone without any distinction, तब प्रॉब्लम आती है. इसी कॉन्टेक्स्ट में यूनिफॉर्म सिविल कोड की डिबेट शुरू होती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसे कोड या ऐसे लॉ की बात करता है जो कि अभी बना नहीं है, बट ऐसे लॉ की बात करता है. पहले मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको. ऐसे लॉ की बात करता है जो कि सभी कम्युनिटीज़ को, सभी रिलीजियस कम्युनिटीज़ को, बीट हिंदूज, बीट मुस्लिम्स, बीट क्रिश्चियंस, राइट, सबको यूनिफाई कर देगा एक लॉ के अंदर, ठीक है. स्पेशली इन दोज मैटर्स जो कि अभी तक यूनिफॉर्म नहीं है, दोज मैटर्स विच पर्टेन टू इनहेरिटेंस, विच पर्टेन टू अडॉप्शन, विच पर्टेन टू मैट्रिमोनियल राइट्स, राइट, सक्सेशन, राइट. इन मैटर्स में जब एक लॉ के अंदर हम सभी कम्युनिटीज़ को बांध देंगे, तब हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ मूव करेंगे. अनफॉर्चुनेटली टुडे, even after 70 years of the commencement of the constitution, right, हम इस objective को achieve नहीं कर सके हैं. Although a landmark step has been taken with regard to the codification of personal laws, जिसको हम customary laws या personal laws कहते हैं, of Hindus, by the enactment of Hindu Marriage Act, by the Hindu Marriage Act of 1955, by the enactment of Hindu Succession Act of 1956, right, wherein a uniformity has been ensured so far as Hindus are concerned in these matters. कौन से matters? Inheritance के rights, right, adoption के rights, right, as well as matrimonial rights like like divorce, and other matters, other related matters. But
so far as other communities, other religious communities, are concerned, like Muslims and Christians, right? They are still governed under their own, what you call as irrational, you can call them as irrational personal laws, right? ये अभी भी उन laws के अंडर गवर्न होते हैं, right? अभी तक कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, और ये पर्सनल लॉज वो उनके रिलीजियस टेक्स्ट से इंटरप्रिटेशन करके बनाए हैं, विच प्राइमा फेसाई, जो अगर हम उनको ऑन द फेस ऑफ इट उनको अगर हम ऑब्जर्व करें, दे आर सर्टनली राइट लोडेड अगेंस्ट द वुमेन ऑफ दिस communities, ये women के against है, although they give they perpetuate a kind of patriarchal mindset, ये एक patriarchal mindset को perpetuate करते हैं, thereby denying the basic human rights जो women को इन communities की women को भी मिलने चाहिए, so far as inheritance is concerned, so far as right matrimonial rights are concerned, right inheritance rights are concerned, right इन communities की जो women हैं, right उनको ये rights नहीं मिलते हैं, and here comes the debate of a uniform civil code, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, ठीक है, राइट। अब सिंस इट इज एन ऐसे टॉपिक, और इस ऐसे टॉपिक में आपको वो तीन कंपोनेंट्स तो आपने याद रखने हैं कि आपकी इंट्रोडक्शन अच्छी हो, राइट। इट इज बेटर टू स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ योर एसे विद ए सुटेबल कोड, राइट, एंड देन उसको आगे हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को डिफाइन करें। दूसरा स्टेप में ये होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, ठीक है, व्हाट इज दिस डिबेट ऑल अबाउट, ये डिबेट किसके लिए है, राइट। फिर हमारा संविधान क्या कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, कहाँ लिखा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की कोशिश करेगी सरकार, वो किधर लिखा है। तीसरा ये पॉइंट आपके ऐसे में आना चाहिए। फोर्थली आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये आपकी बॉडी में आना चाहिए ऐसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की नेसेसिटी क्या है, क्यों बनाना चाहिए, राइट, क्यों बनना चाहिए, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रैशनैलिटी है, ठीक है, राइट। फिर ये आपको पता होना चाहिए व्हाई यूनिफॉर्म सिविल कोड